सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। देश की मोदी सरकार या अडानी पर सवाल उठाने वाला विपक्ष का हर नेता सरकार के कोप भाजन का शिकार हो रहा है। अडानी पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिन्हा हो, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो या फिर अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा हो, सभी को सवाल उठाने की सजा के तौर पर संसद सदस्यता समाप्ति जैसी त्वरित कठोर कार्रवाई सरकार के तानाशाही रवैये का जीता जागता उदाहरण है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। सांसद महुआ मोइत्रा लगातार अडानी पर, अडानी के भ्रष्टाचार पर, अडानी और मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाती रही हैं। महुआ मोइत्रा ने अडानी प्रकरण की संयुक्त संसदीय समिति से विस्तृत जांच करवाने की मांग भी की थी। महुआ मोइत्रा पर सभी की तरह कैश फॉर क्वेरी जैसा मामला बनाया गया, जिसकी पूर्णतया जांच का प्रयास भी नहीं किया गया, ना ही आरोप का जवाब देने का पर्याप्त मौका दिया गया। दूसरे पक्ष से पूछताछ के बिना ही आनन फानन में उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। सदस्यता समाप्ति के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था और आगे भी उठाती रहूंगी। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद विपक्षी सांसद संसद परिसर से वॉकआउट कर गए। I was not allowed to speak inside Parliament. I am using this opportunity to speak outside Parliament. I thank all my colleagues as part of the India Alliance. I thank my party, everybody for standing by me. The 17th Lok Sabha has indeed been historic. It is a house which saw the passage of the Women's Reservation Rescheduling Bill, but it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs, a first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It is no evidence of any cash, of any gifts, anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to all of India
that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Srivastava stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Srivastava stood up and told Danish Ali, ye padwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adi Bhanghingstra Manobikatar Jodi Ami Keu Hoi, Shojon Harane Shoshane Toder Chita Ami Tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bango. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. Used every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of it. So thank you very much. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए अडानी प्रकरण की संयुक्त संसदीय समिति से विस्तृत जांच करवाने की मांग की थी। उन्होंने जेपीसी से जांच कराने की मांग को राष्ट्रीय महत्व का मामला बताया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक साजिश के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। 1 माह के अंदर ही राहुल गांधी का सरकारी आवास भी खाली करवा लिया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली थी। ऐसे ही सरकार और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने नौकरी से निकाले जाने की बात बताते हुए ये भी बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में आरएसएस विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा है। जो लोग भी सरकार की जन विरोधी नीतियों या संविधान विरोधी विचारधारा का विरोध करते हैं, उनके निष्कासन के पश्चात आरएसएस विचारधारा के लोगों का समायोजन किया जा रहा है। सरकार से सवाल करने वाले या अडानी पर सवाल उठाने वाले लोगों को तानाशाही तरीके से सरकार द्वारा साजिशन प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार से सवाल करने वाले विपक्ष के हर नेता को प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि उनमें से कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद आरोप मुक्त हो जाता है। अडानी के तमाम भ्रष्टाचार उजागर हो चुके हैं। भाजपा के रमेश बिदुरी जैसे सांसद संसदीय गरिमा को तार तार कर चुके हैं। गोली मारने के नारे लगाए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम में नफरत का माहौल बनाया जाता है। देश की एकता और अखंडता को खंडित किया जा रहा है, पर उन पर कोई कार्रवाई की जगह उन्हें सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है। मोब लिंचिंग के आरोपियों का माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। बलात्कार के आरोपियों का महिमा मंडन किया जाता है। जबकि विपक्ष के लोग जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो उन्हें साजिशन अन्य मामलों में प्रताड़ित किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में ये कहना गलत नहीं होगा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है।